हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होता है? The structural and functional unit of a body is called a cell. सेल क्या है? हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और फंक्शन हमें काम कराता है। फंक्शनल मतलब फंक्शन करना, काम करना, कोई भी वर्क करना। यूनिट है ना वो, मतलब एक छोटा सा पार्ट है। वो छोटे से पार्ट सारे बहुत सारे सेल मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और फंक्शनल यूनिट है हमारे लिविंग सेल का, बॉडी का। इट्स कॉल्ड अ सेल। ओके, नाउ बी, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल इन अ सेल। डिफरेंट ऑर्गेनल बताने हैं सेल में। क्या क्या होता है सेल में? सी, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे इमेज है। सी, क्या होता है सेल में? न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स आर ऑल डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। इतने सारे और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। ओके, नाउ सी, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ which are in every environmental but can be seen only under a microscope or a compound microscope is called a microorganism. What is the meaning of that? Living organism hai, they are the living organism which are found on the earth. In every environment we can found them. Okay, microorganism we can found them, and but we can't see with our naked eye. We see with the microscope, that is the compound. With the compound microscope we see them. Okay, whom? Microorganism. Okay, now D, which are different types of microorganism? We study about the different types of microorganism. Answer: bacteria, viruses, fungi, alga, protozoan. These are the different types of microorganism. Now question number B, fill in the blanks with the proper words. A, the organelle called the dash is present in plants cells only. Which organelle that is present only plant cell? That is the plastids. Answer is plastids. B, garbage is converted into dash by microorganism. Garbage is converted into fertilizers with the help of microorganism. Microorganism helps in decaying the garbage and it's converted into a manure or a fertilizer. So answer is fertilizer. C, in the cell photosynthesis is carried out with the help of, in the cell photosynthesis, in plant cell photosynthesis take place na with the help of the chloroplast. Chloroplast is present in the plant cell, because of that the photosynthesis takes place. Understood? An electron microscope is necessary for the study of. Electron microscope is necessary for what purpose? Study of microbes. If we have to study the microscope or cell organelles in detail, in each and every part in detail, so we need a electron microscope. Understood? Now question number 3, what is the difference between us, plant cell and animal cell? What is the difference between the plant cell and animal cell? So plant cell मेड अप ऑफ अ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है। ओके, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल हैव अ plasma membrane, they do not have a cell walls. Okay, second, cytoplasm of the plant cell is lesser granular, comma नहीं आएगा, lesser granular and not dense. जो cytoplasm है plant cell का, the plant cell cytoplasm are lesser granular, means dotted part are less in the cytoplasm of the plant cell, but in the cytoplasm of the animal cell it is a more granular, means dotted structure, dotted part are more in the animal cell. Third, there is a single in the plant cell, single large vacuole which is located in the center part. Single large vacuole in the plant cell, and these vacuole is located in the center part, which pushes the cytoplasm. It pushes the cytoplasm to one end, in one corner or one end it pushes the cytoplasm. Okay, vacuole pushes the cytoplasm. Third, animal cell, the cytoplasm is uniformly distributed in the cell. Cytoplasm is equally or uniformly distributed in the animal cell.
Now B, prokaryotic cell and eukaryotic cell. So first, prokaryotic cell. What is the prokaryotic cell? Nucleus. Prokaryotic means primitive type of cell, in that the organelles are not well developed, organelles are not properly arranged, and nucleus of a prokaryotic cell is not distinct. Okay, it's not a properly not a membrane, and nuclear is not present. Nucleoid is present in the prokaryotic cell. In eukaryotic cell, first point, the nucleus of eukaryotic cell is distinct. It has a nuclear membrane, nucleoli and nucleoplasm. All the parts are present and bounded with the double membrane. Okay, double membrane. Second point, prokaryotic cell. Prokaryotic cell are about 1 to 10 micrometer in size. Okay, size is very small, but in case of eukaryotic cell are about 5 to 100 micrometer in size. Okay, compared to prokaryotic cell, they are large in size. Okay, eukaryotic cell. Third, prokaryotic cell. Due to the absence of nuclear membrane, the nuclear material comes in the contact with the cytoplasm. Nuclear membrane is not present, so the nucleus is not bounded by the membrane, so it come in the contact with the cytoplasm. But in case of eukaryotic cell, due to the presence of a nuclear membranes, nucleoplasm and cytoplasm never come in a physical contact with each other, because in the eukaryotic cell nuclear membrane is present. Because of that membrane, cytoplasm is not come in a contact with the nucleus. Okay. Fourth point of the prokaryotic cell, the cell organelle, if present, are without a membrane. If cell organelles are present in the prokaryotic cell, they are not bound with the membrane. Example, we talk about the nucleoid. Nucleoid, they don't have a double membrane or even a single membrane. Okay, but in eukaryotic cell, cell organelle are always bound with the membranes. Understood? So question number 4, sketch and describe in your own words plant cell and animal cell. First, see. This is from your textbook. I have taken plant cell and animal cell. You have to sketch and you have to describe. First, you have to remember 4 to 5 name, labeling, 4 to 5 diagram. You have to mention in that plant cell or animal cells also, and mention the name of that. Okay, labeling is very important. So first we see the plant cell. Plant cell, there is a cellulose, cell wall. Cell wall, na? See, outer structure. It is a cell wall. It is made up of a cellulose. Cellulose is a material. Okay. So, plant cell wall is made up of a cellulose. But when we are talking inside the cell, what is there? Inside the cell wall, there is a plasma membrane. Inside the cell, there is a plasma membrane that encloses cytoplasm. Inside the cell, plasma membrane are present. Cell organelles are embedded in the cytoplasm. All the cell organelles are in the cytoplasm. All the cell organelles present in the cytoplasm. See, we can see this is the whole cytoplasm. These cytoplasm, in that, see, in that the chloroplast present, cytoplasm, see, chloroplast present, Golgi bodies, nucleus, ER, that is endoplasmic reticulum, mitochondria, vacuoles, all these present inside the cytoplasm. Understood? Plastid is an important cell organelle present only in plant cell of these chloroplast perform photosynthesis. Plastid is present. Plastid, see, where is the plastid? You can see plastid is present only in the plant cell. See, chloroplast, see, in the chloroplast there is a plastid which is present in the plant cell. It helps in performing the photosynthesis. Nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria are the cell organelles present in the cytoplasm. We all know that vacuole is usually single and large in size. Since it is present in the center of the cell, the cytoplasm is pushed to one end. See, it is present in the center of the cell, so cytoplasm, vacuole pushes to the one end, to the cytoplasm. Understood? Now animal cell, outermost covering is not a cell wall. In case of animal cell, it is a cell membrane, or we can say plasma membrane. Understood? Second, inside these there is a cytoplasm. Inside the plasma membrane, cytoplasm, in that cytoplasm cell organelle is present. Understood? Embedded or present, the cell organelle as a nucleus, Golgi body, ER, that is endoplasmic reticulum, vacuole, smaller in size. Okay, endoplasmic reticular lysosome in the animal cell, mitochondria is also present in the animal cell. Understood? So now next question, explain the use and the harmful effect of a microorganism. You have to write down the uses and harmful effect. What is the uses and what is the harmful effect of the microorganism? First, use of a microorganism. First point, microorganism
help in the decompose the waste and the sewage water. Microorganism help in the decomposing the waste and the sewage water. Okay, second point, by the process of decomposition they keep the environment clean and make the fertilizer from the garbage. Fertilizers prepared from the waste by this process with the help of biogas plants. The biogas is prepared by the microorganism. Okay, a microorganism also help in preparing the biogas. Third point, microbes that are present in the soil and the root nodules of leguminous plant. It helps in the biological nitrogen fixation. I had explained that they plants cannot take directly nitrogen, and two, they can't take directly. Okay, so nodules है वो convert करते हैं, they convert the nitrogen into the ammonia form, or in a compound of the nitrogen. They convert these into the compound of the nitrogen. Okay, it helps in increasing fertility because of the nodules is present in the leguminous plants. It helps in increasing the fertility of a soil and increasing the protein content because it converts the nitrogen, and the nitrogen gives the proteins. Okay, so it also increasing the protein content of the seed in the legumes. Fourth, microorganism help in the formation of curd and the other milk-based product. Okay, lactobacillus microorganism is present in the curd, so microorganism help in the formation of curd. Fifth, process of fermentation is used. In the fermentation process, we use microorganism. It also used for producing alcohol, grains and fruits, bread from flour, as well as the production of acetic acid, citric acid. These all are with the help of the microorganism. Okay. Processes like tanning of skin, production of ropes and string from agave are also, like tanning of skin, it is also with the help of the microorganism. Oil sick is cleared. Oil sick means the layer of the oil is cleared with the help of some specific bacteria or specific microorganism. It also help in the clearing the oil slick. Now, harmful effect. What is the harmful effect of the microorganism? We all know that microorganisms spoil the food. खाना हमारा बासी हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ द उसमें माइक्रो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं. इन हॉट एंड ह्यूमिड, मोस्टली हॉट में गर्मी में होता है ना, बिकॉज वो टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल रहता है. जो टेम्परेचर रहता है हॉट का, समर का, वो उनके लिए फेवरेबल रहता है उनकी ग्रोथ के लिए. ओके, तो हॉट और ह्यूमिड में फंगल अटैक हो जाता है फूड में. माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंटरोटॉक्सिन. व्हाट इज द एंटरोटॉक्सिन? एंटरोटॉक्सिन एक सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और वो हार्मफुल रहता है और इफेक्ट करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन को, स्मॉल एंड लार्ज बोथ इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. दैट इज द एंटरोटॉक्सिन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट अफेक्ट आवर इंटेस्टाइन. अंडरस्टूड? एंड कॉजेज फूड टॉक्सिसिटी रिजल्टिंग इन, बिकॉज हम वो कंज्यूम करेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो गया ऑफकोर्स. थर्ड, हार्मफुल माइक्रोब्स कॉजेज डिजीज. Harmful microbes, it causes disease also in plants, animals and humans also, like amoeboisis, typhoid, chlorella, hepatitis. ये सब डिजीज़ है. वाटर ख़राब पानी रहता है या ख़राब फूड रहता है, उसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं उससे हमें डिजीज़ होता है. ओके, माइक्रोब्स जैसे कि माइक्रोब्स कॉज डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, ये सब मच्छर के काटने से होता है. फीमेल मॉस्किटोज के काटने, बाइट करने से होता है. ये डिजीज़ होता है बिकॉज ऑफ द मॉस्किटोज. ओके, कॉमन कोल्ड, कफ, डायफेरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, which are caused by the microbes or microorganism. Okay, now give reasons. Question number 6, give reason. A, disease spread on a large scale during periods of heavy rainfall and floods. disease spread होती है ना, मोस्टली अभी तो सीज़न ही चल रहा है, मोस्टली ना रेनफॉल, रेनी सीज़न है. रेनी सीज़न में सबको कफ एंड कोल्ड ही है मोस्टली. पेशेंट्स क्लिनिक में आप देखोगे डॉक्टर के पास मोस्टली पेशेंट कफ एंड कोल्ड के ही आ रहे हैं. तो रेनी सीजन में डिजीज स्प्रेड होता है ना, और फ्लड में और ज़्यादा ही डिजीज स्प्रेड होता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सो आंसर, स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइकली ड्यू टू द हैवी रेनफॉल एंड फ्लड. वी ऑल नो दैट. What is the reason? The water and the food get contaminated. Water and the food contaminated हो जाते हैं. water logging, water drainage proper नहीं होता है. because of the water drainage नहीं हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा. गंदा पानी जमा हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे. ओके, दे स्प्रेड द पैथोजन, और वो स्प्रेड करते हैं पैथोजन को एकदम फास्ट, एकदम रैपिडली, विद इन द सेकेंड स्प्रेड करते हैं. और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्या करता है? इंड्यूस करता है फूड स्पॉइलेज को, फूड खराब हो जाता है. इवन इफ फूड वाटर रिसीड्स, अगर फ्लड वाटर रिसीड, फ्लड वाटर कम भी हो जाएगा तो क्या होता है? जो पॉडल है, पॉडल में जो पडल्स होते हैं, पॉन्ड होते हैं, वाटर का पॉन्ड, गड्ढे में पानी जमा हो जाना, उससे मीन्स हेल्प होता है ब्रीडिंग में. मॉस्किटोज की ब्रीडिंग में पानी जमा है तो वहाँ पे मॉस्किटोज ग्रो होंगे ना, मॉस्किटो का रिप्रोडक्शन होगा, वो ब्रीडिंग करेंगे. तो इस रीज़न के वजह से
स्प्रेड होता है रेनी सीजन में और फ्लड में डिजीजेस ज़्यादा नंबर में। ओके, क्या रीज़न है? डिजीज़ होता है बिकॉज वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में वो उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है और ग्रोथ विद इन द सेकेंड, विद इन द एकदम फास्ट होती है और पैथोजन को रैपिडली स्प्रेड कर देते हैं। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है वो फूड स्पॉइलेज में भी हेल्प करता है। और अगर वाटर का चला भी है, वाटर का फ्लो कम भी हो गया फ्लड में, बट जो पानी जमा है उससे मॉस्किटो का ब्रीडिंग होगा, मॉस्किटो रिप्रोडक्शन करेंगे, मॉस्किटो का नंबर का इंक्रीज होगा और वो डिजीज स्प्रेड करेंगे। दिस इज द रीज़न। बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फूड पॉइजनिंग इफ वी ईट स्टेल फूड। फूड पॉइजनिंग हो सकती है कि हमने स्टेल फूड खाया। व्हाट इज द स्टेल फूड? बासी खाना खाया। तो स्टेल फूड इज लाइकली टू हैव अ माइक्रोब्स इन इट। स्टेल फूड है, बासी है, तो माइक्रोब्स तो रहेंगे ना, माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं, वो खाना फ्रेश नहीं है ना, एक दिन के बाद खा रहे हो आप, तो उसमें माइक्रोब्स हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स प्रोड्यूस, और उसमें से कुछ माइक्रोब्स वी डोंट नो ना कौन सा माइक्रोब्स है और वो क्या प्रोड्यूस करेगा। some microbes produce enterotoxin. What is the enterotoxin? Is a harmful substance. It harms humans. It affects the intestine, small and large both intestine affected by these microbes because of they produce the toxins. Enterotoxin causes, और enterotoxin है वो toxic है तो food poisoning cause करेगा. Therefore there is a possibility of food poisoning if we eat a stale food. Understood? Now third, soil is turned over during tilling. सॉइल टर्न्ड होता है जब हम टिलिंग करते हैं। टिलिंग मीन्स मोस्टली कि हम क्रॉप ग्रो करना है, मुझे सीड सो करना है, डायरेक्टली जैसी भी सॉइल है उसमें तो नहीं करूँगी, उसको टिलिंग करेंगे ना। टिलिंग मतलब उसको सॉइल को लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी जिसे हम कहते हैं। ओके, सॉइल को हम हल्का करते हैं ना, लूज करते हैं, क्योंकि सॉइल टाइट हो जाती है तो उसे लूजनिंग, सॉइल लूजनिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। सो देयर आर सम यूजफुल बैक्टीरियाज रहते हैं सॉइल में। वी ऑल नो दैट बैक्टीरियाज आर इन दी सॉइल यूजफुल। दीज आर द यूजफुल बैक्टीरियाज, दे हेल्प इन डिकम्पोज, और वो डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मटेरियल उस सॉइल में उसे डिकम्पोज करेंगे, सड़ाएंगे और उस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ओके, देयर बाय दे प्रोड्यूस फर्टिलाइजर। सम माइक्रोब्स ऑल्सो, और कुछ माइक्रोब्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, और सॉइल को नाइट्रोजन चाहिए ही, बिकॉज सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट रहेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। अंडरस्टूड? सो हेल्प करते हैं प्लांट्स को कि नाइट्रोजन मिले। माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में वो नाइट्रोजन ऑलरेडी रहते तो वो सॉइल में जाएगा और सॉइल से वो प्लांट्स तक मिलेगा तो प्लांट्स अच्छे से प्रॉपरली ग्रो होगा। दस हैव अ बेटर, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन अच्छा है, नाइट्रोजन का कंटेंट अच्छा है तो बेटर यील्ड मिलेगी, अच्छी उत्पाद मिलेगा हमें क्रॉप का। सॉइल टर्न ओवर द ड्यूरिंग टिल्टिंग टू मिक्स द बैक्टीरिया, और सॉइल को इसलिए टिल्ट करते हैं, इसलिए मिक्स करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया मिक्स हो सके उसमें। ओके, डी, फंगस grow quickly in the moist or humid condition. Fungus grow in the moist condition. Why? Because answer, फंगस नीड अ सूटेबल कंडीशन, दे नीड अ सूटेबल कंडीशन ना, एक उन्हें प्रॉपर कंडीशन चाहिए ना, और मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन उनके लिए एकदम परफेक्ट है, फेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में ही वो ग्रो होंगे। हॉट कंडीशन में फंगस ग्रो नहीं होंगे, ड्राई कंडीशन में फंगस कैन नॉट ग्रो। अंडरस्टूड? ई, रेफ्रिजरेटर इज़ यूज इन ऑलमोस्ट एवरी होम। रेफ्रिजरेटर का हम यूज़ करते हैं एवरी होम में, तो क्या रीज़न है क्यों हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं? आंसर, फर्स्ट पॉइंट, हार्मफुल माइक्रोब्स ग्रो नहीं होते। हार्मफुल माइक्रोब्स डू नॉट ग्रो इन द कोल्ड टेम्परेचर। वी ऑल नो दैट हार्मफुल माइक्रोब्स नॉट ग्रोइंग इन द that much cold temperature. The temperature required, the range of the required growth of the microorganism is the 15 degree to 35 degree. In between the 15 to 35 degree microbes can grow, and in our refrigerator temperature is very low, below the 15 degree, and in between the 0 to 5 degree. Understood? So in the refrigerator temperature is between to 0 to 5 degrees, so microbes they don't have a chance to grow, or they can't grow. Food can be stored there without the spoiling, and food we can store our food without the spoiling. Understood? Therefore, to store a perishable food items, perishable means जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वैसे फूड आइटम को हमें अगर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है तो ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल है कि रेफ्रिजरेटर रहना ही चाहिए। अंडरस्टूड? एफ, ब्रेड राइजेज ड्यूरिंग बेकिंग। ब्रेड राइज होता है ना, इससे साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, आपने देखा होगा, साइज़ में से फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉमनली बेकिंग करते टाइम, जब बेक करते हैं तो रीज़न क्या है? व्हेन द ब्रेड इज़ प्रिपेयर्ड, जब ब्रेड का बैटर ही बनाते हैं ना तो उसमें वी ऐड ईस्ट। ईस्ट इज़ अ फंगस, सॉरी, ईस्ट इज़ अ टाइप ऑफ अ फंगस। अंडरस्टूड? इट अंडरगो प्रोसेस ऑफ, और उसमें फर्मेंटेशन होता है। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन CO2 दैट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, देयरफॉर ब्रेड राइज ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। अंडरस्टूड?
because we added the fungus, that is the yeast. We added the yeast during the battering, जब बैटर बनाते हैं उस ब्रेड का, ओके, जब आटा वो करते हैं, आटा गूंथते हैं, आटा का डो बनाते हैं हम, तो उसमें हम ईस्ट ऐड करते हैं, ओके, और वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन ब्रेड राइज ड्यूरिंग द बेकिंग। अंडरस्टूड। नाउ जी, फूड फॉडर इज सोक्ड इन वाटर बिफोर ऑफरिंग केटल। फॉडर जो केटल का फूड है, ओके, केटल हमारा फूड नहीं, केटल्स का फूड जो हम काउ बफेलोस को देते, डेट इज द फॉडर, फूड ऑफ द केटल्स और फूड ऑफ द काउ बफेलोस। So we soaked in water before offering to cattle. We soaked before to give them the cattle. Why? What is the reason? By adding the fodder into water, it is a fermented. If we add water into the fodder, it is fermentation process होगा. By fermentation vitamin content rise होता है, vitamin content increase होता है. अगर fermentation हुआ उस fodder का तो vitamin content increase होता है. Understood? It easier, और वो digestion के लिए भी easy हो जाता है animals, kettles के लिए. द केटल इज़ दस वेल नरिश्ड, और केटल को अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा, अच्छे से खाना मिलेगा, क्योंकि विटामिन कंटेंट इंक्रीज हो गया ना, तो उसको और अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा ना। देयरफॉर दैट इज़ द रीज़न फॉडर इज सोक्ड इन वाटर बिफोर ऑफरिंग टू द कैटल और ऑफरिंग टू द काउ बफेलोज एटसेट्रा। अंडरस्टूड। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, when will you use a simple microscope and when a compound microscope? Explain in detail how you will use them. क्वेश्चन क्या है? When we will use a simple microscope, there is a two type of microscope na, mostly simple or a compound. When will we use a simple, or when we will use a compound microscope, you have to tell that. So it is very easy. First, simple microscope is of a lesser magnification. We know that simple microscope है तो magnification less रहेगा, हम उसमें एकदम बारीक वाला पार्ट नहीं देख सकते, कुछ ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा देखना है, ऊपरी लेयर को ही देखना है तो हम देख सकते हैं. सो वन कैन ऑब्जर्व इंसेक्ट्स पार्ट्स, इंसेक्ट के पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर वी कैन ऑब्जर्व विद द सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, अंडर अ सच माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड फॉर द observation of microbes. If you have to see the microbes, what is the microbes? Microbes are the small living organism, those we cannot see with our naked eye. For that we need a compound microscope. So from the compound microscope we see the microbes. Understood? Here magnification is 100 to 450 times is more compared to that simple microscope. Understood? Therefore useful for observation of cells and tissues. cell smallest unit है हमारी लाइफ का, जो हम सेल देख सकते हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप का स्टेज यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं अगर डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे. बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्ट टू बी स्टडी बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, हम उसे ग्लास स्लाइड में रखते हैं, प्लेस ओवर अ ग्लास स्लाइड, और कवर करते हैं कवर स्लिप से. ऑब्जेक्ट सेक्शन को बहुत थिन लेते हैं, एकदम पतला सा सेक्शन लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. ऑक्यूलर और ऑब्जेक्टिव लेंस, दो लेंसेस रहते हैं. हमारा जो आई पीस के इधर वाला लेंस है और इसके नीचे वाला लेंस. ओके, दोनों लेंस को प्रॉपर मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, और उसका मिरर को अरेंज करते हैं कि उसको मैक्सिमम लाइट मिले, ऑप्टिमम लाइट मिले. द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फिर आई पीस से जो एकदम ऊपर वाला पार्ट रहता है दैट इज़ द आई पीस. सी आपको यहाँ पर इमेज है, एकदम ऊपर वाला पार्ट दैट इज़ द आई पीस. फिर आई पीस से हम सी आई पीस से हम देखते हैं जो हमें देखना है, सेल्स को, टिश्यूज़ को. ओके, अंडरस्टूड. द कोरस, और यहाँ पे कोरस फोकस नॉब है, हम उसे एडजस्ट करते. सी आपको कोरस एडजस्टमेंट एकदम, और फाइन एडजस्टमेंट मतलब एकदम डिटेल में देखते हैं तो फाइन एडजस्टमेंट का यूज़ करते हैं. और कोरस एडजस्टमेंट मतलब थोड़ा सा ऊपर का पार्ट देखना है तो हम कोरस एडजस्टमेंट, दोनों नॉब रहता है, नॉब को मूव करते तो हमें प्रॉपरली जो भी हमारा सेल है और टिश्यू है वो दिखता है. अंडरस्टूड. इन दिस वे सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते फॉर जनरल ऑब्जर्वेशन एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी यूज़ फॉर स्पेशलाइज्ड ऑब्जर्वेशन दैट रिक्वायर ग्रेटर मैग्निफिकेशन. फॉर दैट द सेल or tissue we required a greater magnification, so we use a compound microscope. Understand? So here explanation of this chapter, the question and answer is completed. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ है चैप्टर नंबर 11 का. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, स्टे सेफ.